राज एज्युकेशन चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. वेल्डर ट्रेड NSQF लेवल 4 वेल्डर CBT मंथली टेस्ट पेपर 1 ट्रेड थिअरी MCQ टाईप क्वेश्चन अँड आन्सर मराठी हिंदी इंग्रजीमध्ये. प्रश्न आइडेंटिफाई द टूल शोन इन द फिगर. चित्र में दर्शाए गए टूल की पहचान करें. खालील दिलेली आकृती कोणत्या टूलची आहे? ऑप्शन ए ट्रायस्क्वेअर, ऑप्शन बी फाईल, ऑप्शन सी चिजल, ऑप्शन डी स्टील रूल. तर दिलेली आकृती ही स्टील रूलची आहे. स्टील रूल ही स्टेनलेस स्टीलपासून बनवलेली असते आणि हिचा लिस्ट काउंट 0.5 mm एवढा असतो. GTAW इज आल्सो नोन एज वेल्डिंग. GTAW को किस वेल्डिंग के रूप में भी जाना जाता है? GTAWलाच आणखी कोणत्या नावाने ओळखल्या जाते? ऑप्शन ए टीग, ऑप्शन बी मिग, ऑप्शन सी मॅग, ऑप्शन डी MMAW. तर GTAW म्हणजे गॅस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, याला स्टिग वेल्डिंग या नावाने ओळखले जाते. GTAW म्हणजे स्टिग वेल्डिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ द CO2 वेल्डिंग. निम्नलिखित में से कौन CO2 वेल्डिंग का दूसरा नाम है? खालील दिलेल्यापैकी CO2 वेल्डिंगला काय नावाने ओळखले जाते? ऑप्शन ए मिग वेल्डिंग, ऑप्शन बी मॅग वेल्डिंग, ऑप्शन सी टिग वेल्डिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ द इज. तर CO2 वेल्डिंगला मॅग वेल्डिंग नावाने ओळखले जाते कारण CO2 गॅस हा ॲक्टिव्ह गॅसमधून उपयोगी येतो. मेटल ॲक्टिव्ह गॅस मॅग वेल्डिंग. ऑप्शन बी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक इक्विपमेंट फॉर CO2 वेल्डिंग सेटअप. निम्नलिखित में से कौन सा CO2 वेल्डिंग के सेटअप के लिए मूल उपकरण है? CO2 वेल्डिंगमध्ये बेसिक उपकरण कोणतं वापरले जाते? ऑप्शन ए वेल्डिंग पॉवर सब सोर्स, ऑप्शन बी वायर फीडर, ऑप्शन सी वेल्डिंग गन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी. तर CO2 वेल्डिंगमध्ये वेल्डिंग पॉवर सोर्स, वायर फीडर, वेल्डिंग गन हे सर्व गोष्टी वापरले जाते, म्हणून उत्तर आहे ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. विच पार्ट ऑफ CO2 वेल्डिंग अँड कंट्रोल द स्पीड ऑफ वायर इलेक्ट्रोड अँड प्रोवाइड द पाथ फॉर द वेल्डिंग करंट एंड गन फ्लो. CO2 वेल्डिंग सेट का कौन सा हिस्सा तार इलेक्ट्रोड की गति नियंत्रित करता है और वेल्डिंग धारा और गैस प्रवाह के लिए पाथ प्रदान करता है? तर CO2 वेल्डिंगमध्ये इलेक्ट्रोडचा स्पीड कशावर नियंत्रित होतो? ऑप्शन ए वेल्डिंग पॉवर सोर्स, ऑप्शन बी वायर फीडर, ऑप्शन डी वेल्डिंग गन, ऑप्शन डी शिल्डिंग गॅस सिलेंडर. तर वायर फीडरवर इलेक्ट्रोडचा स्पीड नियंत्रित होतो. विच मेटल अलाय इज यूज टू मेक अ कॉन्टैक्ट टिप ऑफ मिग वेल्डिंग. मिग वेल्डिंग टार्च में टिप बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? मिग वेल्डिंगमध्ये टिप बनवण्यासाठी कोणत्या मिश्र धातूचा उपयोग केला जातो? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी ॲल्युमिनियम, ऑप्शन सी माइल्ड स्टील, ऑप्शन डी झिंक. तर कॉपर या धातूचा मिग वेल्डिंग टार्चमध्ये कॉन्टॅक्ट टिप बनवण्यासाठी केला जातो. कॉपर या मिश्र धातूचा उपयोग. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ट्रांसफर मोड इन मिग वेल्डिंग इज आल्सो कॉल्ड एज अ डीप ट्रांसफर. मिग वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किस धातु अंतरण मोड को डीप अंतरण भी कहा जाता है? तर मिग वेल्डिंगमध्ये मेटल ट्रान्सफरमध्ये डीप ट्रान्सफरला आणखी कोणत्या नावाने ओळखलं जाते? ऑप्शन ए स्प्रे ट्रान्सफर, ऑप्शन बी शॉर्ट सर्किट ट्रान्सफर, ऑप्शन सी ग्लोबुलर ट्रान्सफर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. तर मिग वेल्डिंगमध्ये डीप ट्रान्सफरला शॉर्ट सर्किट ट्रान्सफर या नावाने ओळखले जाते. ऑप्शन बी शॉर्ट सर्किट ट्रान्सफर. डीप ट्रान्सफर सुद्धा याला म्हणतात. द सिलेक्शन ऑफ वायर इलेक्ट्रोड टू बी यूज्ड इन CO2 वेल्डिंग विल डिपेंड अपॉन विच फैक्टर. CO2 वेल्डिंग में प्रयोग किए जाने वाले तार इलेक्ट्रोड का चयन किस कारक पर निर्भर करेगा? CO2 वेल्डिंगमध्ये वायर इलेक्ट्रोडचा सिलेक्शन कोणत्या घटकावर अवलंबून असते? ऑप्शन ए जॉइंट डिझाइन, ऑप्शन बी कंपोजिशन ऑफ मेटल बीइंग वेल्डेड, ऑप्शन सी द प्रोसेस बीइंग यूज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी. तर CO2 वेल्डिंगमध्ये वायर इलेक्ट्रोडचा सिलेक्शन हा
ज्या मेटलला वेल्ड करायचं आहे त्याच्या कंपोजिशनवर अवलंबून असते. कंपोजिशन ऑफ मेटल बिंग वेल्डेड. ऑप्शन बी. विच ऑफ द फॉलोइंग इनर्ट गैस इज यूज्ड इन मिग वेल्डिंग. निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस का प्रयोग मिग वेल्डिंग में किया जाता है? ऑप्शन ए एर्गॉन, ऑप्शन बी झेनॉन, ऑप्शन सी कार्बन डायऑक्साइड, ऑप्शन डी नायट्रोजन. तर मिग वेल्डिंगमध्ये एर्गॉन या इनर्ट गॅसचा उपयोग केला जातो. ऑप्शन ए एर्गॉन. मिग वेल्डिंगमध्ये एर्गॉन गॅसचा उपयोग केला जातो. व्हाट इज द पर्पज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी यूनिट अवेलेबल इन टिग वेल्डिंग मशीन. टिग वेल्डिंग मशीन में उपलब्ध उच्च आवृत्ती इकाई का प्रयोजन क्या है? टिग वेल्डिंगमध्ये हाय फ्रिक्वेन्सी युनिट का वापरल्या जाते, त्याचा उद्देश काय? ऑप्शन ए स्टार्टिंग द आर्क, ऑप्शन बी इन्क्रीज द आर्क व्होल्टेज, ऑप्शन सी रिड्युसिंग द व्होल्टेज करंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दी. तर टिग वेल्डिंगमध्ये हाय फ्रिक्वेन्सी युनिट वापरण्याचं कारण स्टार्टिंग आर्क करण्यासाठी वापरल्या जाते. ऑप्शन ए स्टार्टिंग द आर्क. आइडेंटिफाई द वेल्डिंग डिफेक्ट शोन इन फिगर. चित्र में दर्शाए गए वेल्डिंग दोष की पहचान करें. खालील दिलेल्या आकृतीतील वेल्डिंग दोष ओळखा. ऑप्शन ए ओव्हरलॅप, ऑप्शन बी अंडरकट, ऑप्शन सी पोरॅसिटी, ऑप्शन डी लॅक ऑफ फ्युजन. तर खालील दिलेल्या आकृतीमध्ये वेल्डिंग बीडवर बारीक छिद्र दिसतात. हा डिफेक्ट पोरॅसिटी असतो. ऑप्शन सी पोरॅसिटी. नेम द वेल्डिंग प्रोसेस शोन इन पिक्चर. चित्र में दर्शाए गए वेल्डिंग प्रक्रिया का नाम बताएं. खालील दिलेल्या आकृतीमध्ये सिलेंडर, वेल्डिंग गन, पॉवर सोर्स आणि टंगस्टन इलेक्ट्रोड दाखवलेले आहे. ही आकृती कोणती? ऑप्शन ए टिग, ऑप्शन बी मिग, ऑप्शन सी मॅग, ऑप्शन डी MMAW. तर दिलेली आकृती ही टिग वेल्डिंगची आकृती आहे. टंगस्टन इनर्ट गॅस वेल्डिंग, याला GTAW सुद्धा म्हणतात. In straight polarity of TIG welding, what percentage of the hot heat goes to the electrode end? TIG welding की सरल ध्रुवता में ताप का कितना परसेंटेज इलेक्ट्रोड के सिरे पर जाता है? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 70, ऑप्शन डी 100. तर TIG वेल्डिंगमध्ये हीट ही 30% इलेक्ट्रोड एंडवर जाते. गैस नोजल ऑफ टार्च यूज्ड इन टंगस्टन आर्क वेल्डिंग इज मेड अप ऑफ. गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले टार्च गैस का नोजल किससे बनता है? ऑप्शन ए प्लास्टिक, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी ग्लास, ऑप्शन डी सिरॅमिक. गॅस टंगस्टनमध्ये नोजल कशाची बनवलेली असते? तर नोजल ही सिरॅमिक मटेरियलची बनवलेली असते. आइडेंटिफाई द वेल्डिंग जॉइंट शोन इन द फिगर. चित्र में दर्शाए गए वेल्डिंग जोड़ की पहचान करें. खालील दिलेल्या आकृतीतील वेल्डिंग जोड हा कोणता आहे? ऑप्शन ए टी जॉइंट, ऑप्शन बी कॉर्नर जॉइंट, ऑप्शन सी बट जॉइंट, ऑप्शन डी लॅप जॉइंट. तर दिलेल्या आकृतीमधील वेल्डिंग जोड हा टी जॉइंट प्रकारचा आहे. अशा प्रकारे हा व्हिडिओ जर आपल्याला आवडला असल्यास याला लाईक आणि आपल्या गरजू मित्रांमध्ये शेअर करा. अजूनपर्यंत राज एज्युकेशन चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉन बटन प्रेस करा जेणेकरून राज एज्युकेशनतर्फे नवीन नवीन व्हिडिओ इंजिनिअरिंग ड्रॉइंग, इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स, ITIचे संपूर्ण सिलॅबस, ओळख महाराष्ट्राची म्हणजे स्पर्धा परीक्षेचा सिलॅबस इत्यादी व्हिडिओ पाठवले जातात. धन्यवाद.